Sir, Mr. Sanjay Beshia and Mrs. Usha Beshia. Welcome everyone to Marshall Children's Secondary School. We all have gathered here for the science fair. In India, every year we celebrate National Science Day on 28 February to mark the discovery of the Raman effect by Sir C.V. Raman. All the children have exhibited their models here. All the models are made under the supervision of science teacher Mr. Jasir sir and Mrs. Jyoti ma'am. Thank you. Firstly, I call to class 10 Lalita. She introduced something about science day. समस्याओं के समाधान का हल पाओगे यदि विज्ञान की ताकत को समझ जाओगे। Respected principal sir, ma'am, teachers and my dear friends, I am Lalita from 10th standard Marshall Children's Secondary School. आइए विज्ञान को देश की एवं खुद की ताकत बनाएं। आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस महान भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्र बेकर द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। सर सी.वी. रमन पहले एशियाई और भारतीय थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा हुई थी। इसे पहली बार 1987 में मनाया गया था। इस साल 2024 में नेशनल साइंस डे की थीम इंडिजियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। Thank you, Lalita. Now I call to Nancy, class 9. Please welcome. Good morning everyone. I am Nancy from Marshall Children's Academy School, Bollywood. As you know, today we celebrate the National Science Day to remember the discovery of Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman won the Nobel Prize in the physics field in the year 1930. This fact is celebrated on the National Science Day. On 1987 February 28, the Indian government noticed the first National Science Day. So from then we celebrate this day every year. Thank you. Now I invite to Science Sir Mr. Jasir. Please come on stage. Good morning, Principal Ma'am and Respected Sir. Good morning, all students and all staff members. Today, we celebrate National Science Day in Marshall Children's Academy, our school. So, National Science Day is celebrating of scientific inquiry and discovery that marks that anniversary of the discovery of the C.V. Raman effect. What is Raman effect? What is discovered? So, we suggest Raman's effect. What is Raman effect? Scientist C.V. Raman discovered Raman effect on 28 February. India celebrated this anniversary 28 February 1986. Then continuously our country's schools, colleges and other scientific research centers so celebrate National Science Day. National Science Day 28 February is the day when India commemorated the discovery of Raman effect. Raman effect was a ray of light passing through a beam. A ray of light passing through a prism or any transparent medium. Then ray
spectrums. That was Raman effect. So all schools, colleges celebrate then National Science Day. Thank you. Thank you, Jasdeep sir. Now I invite to our principal sir, Mr. Sanjay Vishya, please come on stage. Thank you, Jyoti. सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को व पूरे शाला परिवार को मेरी ओर से विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। ये हमारे भारतवर्ष के लिए एक बड़ा ही गर्व का विषय है कि पहले वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन एशियाई ही नहीं, भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये गोरे नहीं थे, जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले वो सभी गोरों को मिले। एशिया में सिर्फ एक ही मात्र ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो भी प्रथम। इनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। इन्होंने प्रिज्म पर कार्य किया था। ये एक बार छोटा सा वाक्य बता देता हूं उनके बारे में। इन्होंने खोज कैसे शुरू की, क्योंकि आप जितने भी भावी जो बच्चे बैठे हैं ये भी एक दिन वैज्ञानिक बन सकते हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। यदि साइंस में से क्यों को निकाल दिया जाए तो पूरी की पूरी पृथ्वी जीरो है। साइंस क्यों पे ही आधारित है। जैसे मैं चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं, लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है, यानी कि हर शब्द में क्यों का एक बड़ा महत्व है। साइंस क्यों पे लिखी हुई है। ये एक बार विदेश यात्रा कर रहे थे जहाज से, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो ब्लू कलर का था, नीले रंग का था। इनके मन में दिमाग में बात आई कि ये जो ब्लू कलर है वो आसमान के ब्लू रंग के कारण है या इसका कोई अलग प्रभाव है। ये आसमान नीला कलर का होता है, इसलिए पानी भी क्या है, ब्लू दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने इस पर सर्च किया और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी पदार्थ का रंग दूसरे पदार्थ के रंग से कभी परावर्तित नहीं होगा, वो तो उसकी किरणों, पड़ने वाली किरणों के ऊपर इफेक्ट करता है। यदि हम किसी किरण को उसके ऊपर डालेंगे तो उससे क्या होगा, इफेक्ट होगा। उस इफेक्ट के कारण ही क्या होगा, उसका कलर ब्लू दिखाई देगा। इसी खोज के लिए ही इन्हें क्या किया गया, प्रिज्म के साथ कलर आए। किसी मान लो किसी धातु का हमें पता करवाना है तो हम इस रमन प्रभाव से हम पता करवा सकते हैं। किसका कलर कैसा होगा उसका पता करवा सकते हैं। इन सभी के लिए ही इनको क्या किया गया, प्राइज मिला। तो आज आप लोगों ने और साइंस टीचर्स ने जो मॉडल्स यहाँ बनवाए हैं और बच्चों को एक क्रियान्वित समूह है स्थापित करने की कोशिश की है, उसके लिए धन्यवाद। और आप यूं ही हमेशा आगे बढ़े रहें और अपना साइंस में योगदान दें। Thank you, Principal Sir. Now children will start showing their models one by one. Good morning all of you. My name is Shalu. I am from class 8 in Marshall Children Academy Secondary School, Goluwala. Good morning all of you. My name is Gazal. I am from 8th class in Marshall Children Academy Secondary School, Goluwala. First of all, thank you for giving us the opportunity to tell about this model. We have designed a model on hostel wiring.
This model will understand you. Yes. This model will help us to understand how hostel wiring is done and how these bulbs are attached to one switch. Now Ghazal will explain you. Like there are 3 rooms, room 1, room 2 and room 3. If we press this button, then the electricity supply is turned on. And if electricity supply is on, then the students of all 3 rooms can switch on or off the bulbs of their rooms like this. When electricity supply is cut, then students cannot on and off their bulbs in these rooms. Thank you. Good morning, my name is Ruhani and it is class 6. Today I made a project on water cycle. Today I explain you what is the process of water cycle. So first of all, my science teacher name is Jaspreet sir and my school name is Marshall Children Academy Secondary School Goluwala. So let's get started. This is the sea and sea water convert into a steam and cloud pulling it and cloud rain on a humid place. Then rainwater go in river and both river go in same place like a sea. And this is called a process of water cycle. Thank you for introduction. Good morning, sir. I am Lavish Kumar. I read in class 6 in Marshall Children Academy Secondary School, Goluwala. I am presenting a model of day-night cycle of the Earth. The Earth rotates at its axis. Because of this, we have day and night. The side which is exposed to sun, there is daytime, and on the other side there is night time. The Earth will take approximately 24 hours to rotate at its axis. There is 12 hours of day and 12 hours of night. Thank you. Good morning all of you. My name is Chirag. I read in 6th class. Today my project. We know that the earth takes 365 days to complete a revolution around the sun and the moon takes 28 days to complete a revolution around the earth and the earth take 1 full day to complete a rotation on its axis. Every 4th year, the 9 days, 9 hours and 6 minutes are added as the extra day, which are designed and leap year. Thank you. My name is Daksha. My school name is Master Chandra Academy School, Goluwala. I read in class 11. Tongue, nose, hand, eyes, ear. Thank you. Good morning, my name is Gunjan. I am from 7th standard. She is my classmate. Her name is Jaspreet Kaur. Our school name is Marshall Children's Secondary School. We made 2 projects. Our first project name is respiratory system. The main part of the respiratory system is lungs. The lungs are the soft organ and large organ in our body. The lungs contain 300 million of organs. When we inhale, the air comes in the body for the lungs nostril and comes in the pipe. The windpipe is divided into 2 parts which called bronchus. The bronchus enter to the lungs. The nodules are present in the lungs. The nodules are thin balls which carry blood capillaries. When we exhale, the CO2 comes in the windpipe. From windpipe, it is exhaled from our body with the help of nostril. Smoking damage our lungs, it must be avoided. Our second project is how heart reach the blood into our parts of the body. In a heart is the most sensitive part in our body. There are 4 chambers in the heart. They are right and left ventricle. They are right and left atrium. In an heart, right atrium and ventricle receives CO2 blood from all parts of our body, and they send to the lungs for purification, and the lungs send back to the left ventricle and atrium. Good morning, respected principal sir, ma'am and teachers and all my dear friends. My name is Gauri and she is my classmate Anmi. We are class 5th A. Our model name is solar system. The sun is
The sun is the head of our solar system. There are 8 planets in our solar system. Mercury is smallest planet in our solar system. Jupiter is biggest planet in our solar system. Mars is red planet in our solar system. Venus is hottest planet in our solar system. Each planet moves their sun. The 8 planet name Mercury, Mars, Earth, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. We live in Earth. I like Earth very much. Thank you. Have a good day. Morning to all, I'm happy science report. Today we have made this Chandrayaan the ambitious and successful lunar mission by ISRO India. Before our introduction, we will thank you for giving us this opportunity to introduce ourselves. My name is Manika. My name is Poonam. My name is Parvi, and we are in 6th standard in Marshall Junior Academy Secondary School, Golwala. Chandrayaan 3 was great. Chandrayaan 3 was launched on 14 July 2023 and landed on the moon 23 August 2023. Chandrayaan 3 was a successful mission by the Indian Space Research Organization, and Chandrayaan first and second does not success because there are some technical issues. Chandrayaan 3 was launched aboard on LVM-3 M4 rocket from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, second launch pad, Andhra Pradesh, India. The liquid hydrogen and oxygen is used in it, and 4 grams of gold is also used. Chandrayaan 3 is made to demonstrate the new technologies to make India's first soft landing on other Celsius models. The budget of this mission is about 600 crore. So this is our Chandrayaan. This is worked by air pressure. Thank you, sir, dear, for this time. Sir, Yes, you have alarm. Sir, this is a peak alarm. So this is a mini generator. This is करो प्रोसेस स्लाइडिंग में देखो, आप खुद देखो ना, खुद देखो उसको सही करो। हाँ स्मेल teachers and all my dear friends. My name is Ruby and she is my classmate. I love you. आप करो अच्छे से, पहले ये वाला किसी बॉयज की दिला। ये वर्किंग करते हैं, वर्क तो करके दिखाओ। कौन करके दिखाओ? सर उसको बैठ देगा, दोबारा भी बनेगी।
our body. They are present on either side of our spine. The kidneys balance the body's fluid. They are reddish brown in color. सर जैसे कि अभी हमारे लंग्स यूँ काम करते हैं, जैसे कि ऊपर होगा तो हमारे लंग्स यूँ फूल जाएंगे, यूँ हमारे लंग्स के हवा हमारे जब अंदर आती है तो वो हमारे लंग्स फूल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी सांस लूँगा तो मेरे लंग्स ये जो है फूल गए हैं, इसी जैसे कि मैंने हमारी तो ये सारे फूल गए, यूँ हमारे लंग्स काम करते हैं। My class teacher name is Jeetna. My school name is Martin Luther King School.